Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now focus on this one and what is getting said or asked in the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है? A solid cube of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface in xy plane as shown in the figure. So you can see the diagram, it is kept in xy plane. Done? ये दिख रहा है आपको द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन सरफेस एंड द क्यूब दैट इज ऑन दिस सरफेस एक्स वाई प्लेन का जो सरफेस है उसका फ्रीक्वेंसी सॉरी friction coefficient is given as 0.4. An external force of this value is applied on the cube. So we are applying external force of this value. Then we are getting asked the block starts slipping over the surface, friction force on the cube, friction force का direction somewhat, and the contact force exerted by surface on the cube. So सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. So if you see carefully 6 I cap in this direction 6 Newton is acting, in this direction 8 Newton is acting, and in this direction 20 Newton. Done it? And since this surface is on what is, I mean this block is on a surface, normal reaction force will act, and it will act in this direction perpendicular to the surface xy surface, right? So let's say this normal reaction is n, okay, and then mg will act downward, so this is your mg. If you balance the forces you will be writing 20 plus n will be equal to how much mass into g, that is 50. Because this block is, I mean, in this direction, we need to balance it because it is not flying sort of, so we can equate it. Normal reaction तुम्हारा क्या आएगा 30 newton, so this is 30 newton. Now, I mean, what is the, why this friction of the surface will get active? Friction operate क्यों होगा? This is my question. So friction देखो इसलिए operate होगा क्योंकि in this xy plane there is external force acting. And what is the value of that external force? If you see here, this is 8, right? This was 6 and 8. So this is 6, this is 8. 6 and 8 का resultant आप निकाल लो. It is somewhat this, and okay, it will make less angle with 8 Newton thing. So it is this, right? And this will be how much? 10 Newton. So 10 Newton of external force is acting on this block. Then, and this 10 Newton will try to move it in the xy plane. And so friction will operate. And that friction will try to, I mean, stop it. So let us check. Maximum friction का value क्या होता है? So that is equal to mu n and 0.4 into normal reaction. Normal reaction क्या है 30 Newton by the surface xy. So this is 30 and this is how much 12 Newton. So maximum friction force 12 Newton है. External force कितना मिल रहा है इसे 10 Newton मिल रहा है. समझ रहे हो? अब तुम सोचोगे कि मैम एक्सटर्नल फोर्स में आपने इसको क्यों नहीं काउंट किया? तो इसको इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि ये वाला फोर्स इसको एक्स वाई प्लेन में मूव नहीं करना चाहेगा. इट विल ट्राई टू टेक इट अलोंग द जेड एक्सिस. ठीक है? सो इट इज लाइक दिस. अब देखो यहाँ पे दिस फ्रिक्शन acting on the surface thing will get initiated because of force acting in the xy plane, which is equal to 10 Newton. So external force हमारे पास कितना है? That is 10 Newton, and maximum friction force is 12 Newton. So maximum friction force operate नहीं होगा, then limiting friction operate नहीं होगा. Friction force equal to external force will act, and that will basically keep it at rest. क्योंकि हमारा external force is less than that of maximum friction force. डन है. सो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगने वाला है? इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 10 न्यूटन. सो दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग. सो चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं. डन है. व्हाट इज द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द सरफेस? नो. द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द क्यूब बाय द सरफेस 10 न्यूटन? यस. द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल 1 to 7 डिग्री. चलो इसको चेक कर लेते हैं. विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो मैंने देखो ये वाला ऐसा था लाइन, दिस इज एक्स लाइन, दिस इज वाई लाइन. ठीक है? फ्रिक्शन मैंने कुछ ऐसे लगाया है एंड इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लो. डन है. एंड दिस इज, आई मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहा है, यानी कि दिस एंगल. डन है. सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? आई मीन दिस इज 10 न्यूटन, राइट? And this 10 Newton is resultant of basically what? This is 6 and this is 8, because this 10 Newton friction is operating because of this 6 and 8 Newton getting applied in this way. डन है. सो ये 6 और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट किधर की तरफ है? इधर है.
10 Newton, right? And this angle will be how much? If you, which angle we should be interested in calculating? Let us calculate this one. So यहाँ से आप ऐसे perpendicular बना लो. Let us say this is theta. So tan theta is equal to how much? Tan theta is equal to 8 by 6. So that is your 4 by 3. And this will give you how much? आपको भी पता है tan 53 is 4 by 3. So theta is equal to basically how much? 53 degree. Done it? So this is 53 degree, and this whole, this whole thing is how much? This whole thing is how much? This is your 180, right? So 180 minus 53 आप कर लो. That will give you how much? That will be actually equal to 27, right? Yes, 127 degree. So yeah, it is making an angle of, option kya tha? Friction force act in xy plane at an angle of 127 degree with the positive x-axis in the clockwise direction. Yes, it is true. The contact force exerted by surface on the cube is, contact force में क्या क्या है? देखो यहाँ पे contact force तुम्हारा दो लग रहा है, एक है friction और दूसरा तुम्हारा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. डन है. सो हमारे पास दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा है? एक्स वाई प्लेन में लग रहा है 10 न्यूटन. ठीक है. एंड अनदर इज नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अलोंग द जेड एक्सिस एंड दैट वाज इक्वल टू हाउ मच? 30 न्यूटन, राइट? कितना था तुम्हारा? यस. सो दैट इज योर बेसिकली 30 न्यूटन. इन दोनों का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज टू, राइट? फ्रिक्शन एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन. सो इन दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो. इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? वन इज इन एक्स वाई प्लेन, अनदर इज अलोंग द जेड एक्सिस. एंगल इज 90 डिग्री. डन है. सो एट 90 डिग्री वी हैव टू फोर्सेस, 30 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. सो इसका रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे 900 प्लस 100, सो दिस इज 1000. सो दिस इज 10 रूट 10 न्यूटन. So it seems like it is correct, right? Yeah, it is also correct. So we have three options correct. First is incorrect. I hope you have understood this question. यहाँ पे देखो समझने की चीजें बस इतनी थी कि यहाँ पे XY plane, this body is in contact with only one surface, that is XY surface. ठीक है. और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट एफ मैक्स एंड दैट यू विल डू बाय म्यू एन. एन परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन डायरेक्शन, प्लेन से परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन. दैट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी अलोंग द जेट लाइन. Done. So that we have done and calculated F max. After that, you need to check what is the force acting on the body in the XY plane. So that is equal to 10 Newton. 8 and 6 का resultant. So friction maximum which is 12 Newton will not operate, 10 Newton लगेगा. उसके बाद तुमसे ये पूछा गया था, एंगल तो आप निकाल सकते हो, वेक्टर थिंग से. डन है. उसके बाद था तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पे फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा. डन है. So I hope you are clear with this question, but if you have any doubt anyway, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.